Good morning, friends. Hope you are doing well. So, last day we have learned the topic of industries. Industry refers to what, friends? Already we have discussed. Industry refers to the economic activity which are connected with the conversion of resources into useful goods. The main part of the industry is that to convert the raw material into the finished products, right? No? And in that we have learned the first is the primary industry. So what we have learned in the primary industry, the industry which are very much associated with the nature, and in that we have learned two concepts. One is extractive industry and number two is a genetic industry. Genetic industry is applicable to plants, animals, right? Okay, इसे पढ़ा कि नहीं आपने? Okay, now we are moving towards the second topic, that is secondary industry. Now, what is that? Secondary industry means which are, we can say, which is the backbone of the industry. Like we can say iron, metals and all, which are converted into cars, manufacturing, machines, computers, everything which are more durable. Washing machine, TV, electronic, वो सब. मतलब with the help of primary industry, they convert their raw materials into a fine metals, and after that it will convert it into the cars and all. That is known as secondary. So let's see. These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage. Why they want to say that? Because the primary stage, all the raw materials are made, right? Like we can say, right? Right? What we can say, like wheat farming industry, we take the rice, wheat and all, and after that the conversion is done. Okay, so what we can say, secondary industry, these are concerned with using materials. These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage. This industry process such material to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. So what we can say, secondary industries. These are concerned with using materials which have already been extracted at the primary stage. What we can say, these are concerned with using material which have already been extracted at the primary stage. These are concerned with using materials which has been already been extracted at the primary stage, right? These industries process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. These industries, what they do, they process such materials to produce goods for final consumption or for further processing by other industrial units. For example, mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of steel by way of further processing of raw iron is a secondary industry. Secondary industry may be further divided as follows. More classifications are there, right? So let's see that the first is what? A primary industry. So already we have discussed the primary industry. Primary industry is again classified into two: extractive industry and genetic industry. While what is secondary industry? Secondary industries are those industry, right, which are concerned to convert the raw material into the finished products. Okay, example we have mining of iron ore is a primary industry, but manufacturing of a steel by the way of further processing of raw iron is a secondary industry. Manufacturing industry. Now, what is that manufacturing industry? These industries are engaged in producing goods through proceeding of raw material, right? Manufacturing मतलब क्या होता है? सामान बनाना. So what we can say, these industries are engaged in producing goods, सामान बनाना, through processing of raw material. तो क्या लिखा है? These industries are engaged in producing goods
through processing of raw material and thus creating फॉर्म यूटिलिटी. कौन सी यूटिलिटी बढ़ा देते हैं? फॉर्म. फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसका जो सबटेंस होता है वो बदल देते हैं. So what we can say, those industries which are engaged in producing goods, those industries which are engaged in producing goods, सामान बनाना, through processing of raw material, कच्चे माल को प्रोसेस करके, and thus create which utility? फॉर्म यूटिलिटी. कौन सी यूटिलिटी बनाते हैं? फॉर्म यूटिलिटी. They bring out diverse finished products. कौन से finished product? Diverse finished products, and that we consume or use through the conversion of raw materials or partly finished materials, right? Through the conversion of raw material or partly finished materials in their manufacturing operation. Manufacturing industries may be further classified into 4 categories on the basis of operation for production. जैसे कि नंबर 1 है एनालिटिकल इंडस्ट्री. कौन सा नाम दिया है? एनालिटिकल इंडस्ट्री विच एनालाइज एंड सेपरेट्स डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम द सेम मटेरियल इन केस ऑफ ऑयल रिफाइनरी. राइट, एनालाइज करके उसको अलग करना. विच एनालाइज एंड सेपरेट डिफरेंट एलिमेंट विद द सेम. जैसे कि क्रूड ऑयल की बात हो रही है, right? It takes into, we know, petrol, kerosene, naphtha, diesel, right? Last में tar बचता है, तो वैसे उसको अलग करना. Analytical industry we analyze and separate different elements from the same material. जैसे कि ये wheat होता है, उसमें से भी wheat अलग करते हैं, फिर उसमें से refined flour, जैसे कि मैदा होता है, तो उसमें से अलग अलग करके हम लाते हैं उसको. So analytical industry which analyze and separates different elements from the same material is as in the case of oil refinery. Synthetic industry which combines various ingredients into a new product as in the case of cement. Cement मतलब material है जो हम कोई बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तो सिंथेटिक इंडस्ट्री बोलते. सिंथेटिक मतलब मिक्स करके बनाना. सिंथेटिक इंडस्ट्री विच कंबाइंस वेरियस इंग्रेडिएंट, बहुत सारी चीजों को डाल के, इनटू अ न्यू प्रोडक्ट, मिक्स करके, इन द केस ऑफ सीमेंट. प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किसे कहते हैं? प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? वही जो सामान को प्रोसेस करना. देखो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व सक्सेसिव स्टेजेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एज इन द केस ऑफ शुगर एंड पेपर. पेपर हम जानते हैं इट इज मेड फ्रॉम वुड पल्प, एंड शुगर वी नो इट्स मेड फ्रॉम शुगर केन. लेकिन कैसे बनता है? इट रिक्वायर्स द गुड प्रोसेसिंग. प्रोसेसिंग करके इसे बनाया जाता है. ठीक है. असेंबलिंग इंडस्ट्री. असेंबलिंग का मतलब क्या होता है? जब प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके. असेंबलिंग इंडस्ट्री विच असेंबल्स different component part to make a new product as in the case of television, car, computer. So what we can say, analytical industry से कहते हैं. Analytical industry which analyze and separates different element. Analytical industry which analyze and separate different element from the same material, एक ही material as in the case of oil refinery. Synthetical industry किसे कहते हैं? Synthetical industry means which combines various ingredients into a new product as in the case of a cement. Processing किसे कहते हैं? Processing industry which involves successive stages for manufacturing of finished products. Assembling industry किसे कहते हैं? Assembling industry which assembles the different component parts to make a new product as in the case of television, car, computer. सही है. तो ये हुए मेन 4 कैटेगरी. तो कौन से कैटेगरी हुए? एनालिटिकल इंडस्ट्री हुआ, सिंथेटिकल इंडस्ट्री हुआ, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हुआ, असेंबलिंग इंडस्ट्री हुआ. नाउ कम्स द टॉपिक. ये देखो, ये पूरा बताया गया है, चार्ट शोइंग द बिजनेस एक्टिविटी. कैसे किया है? बिजनेस को 2 भाग में बांटा गया है. बिजनेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज नोन एज इंडस्ट्री एंड वन इज नोन एज कॉमर्स. इंडस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया है. ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री. प्राइमरी को फिर से 2 भाग में बांटा जाता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री. सेकेंडरी को भी 2 भाग में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. अब मैन्युफैक्चरिंग को भी याद है, हमने 4 भाग में बांटा था.
कौन से थे? एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग बना के और असेंबलिंग करके। अब यहां तक हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं तो टेरिटरी इंडस्ट्री आता है। लेट्स सी दैट आल्सो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन पता ही है आपको, ब्रिजेस, रोड, ब्रिजेस बनाना। दीज इंडस्ट्रीज आर इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ, क्या क्या बनाना है? बिल्डिंग बनाना है, डैम्स बनाना है, ब्रिजेस बनाने हैं, रोड एज वेल एज टनल्स एंड कैनाल्स। Engineering and architectural skills are an important part in construction industry. So what we can say construction industry? These industries are involved in the construction of क्या क्या बनाना? बिल्डिंग बनाना, डैम्स बनाना, ब्रिजेस बनाना, as well as the tunnels and canals. Engineering and architecture skills are an important part in the construction industries, right? So what we can say, construction industry को भी भाग दिया गया. These industries are involved in the construction of building, dams, bridge, road, as well as the tunnels and canals. Engineering and architectural skills are an important part in the construction industries. बराबर? ये हुआ. Now comes the tertiary industry. Now what is that tertiary industry? Tertiary industry का मतलब वो होता है which are very much close and connected to the customer. These are concerned with providing support services. क्या लिखा है? These are concerned with providing support services to primary and secondary industry as well as the activities related to trade. क्या लिखा है? Tertiary industry. These are concerned with providing support services. क्या लिखा है? These are concerned with providing सपोर्ट सर्विस, सपोर्ट देना किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री एज वेल एज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू ट्रेड. These industries provide service facilities as business activities. There may be considered part of commerce because of auxiliaries to trade. These activities assist trade. Included in this category are transportation होता है, banking होता है, insurance होता है, warehousing, communication, packing and advertising. तो ये सब चीज हो जाता है कस्टमर के पास लेके जाता है. So what we can say, tertiary industry. These are concerned with providing support services. क्या लिखा है? These are concerned with providing support services to primary and secondary industry as well as the activities relating to trade. These industries provide service facilities as business activity. They may considered the part of commerce because of activity trade. These activities assist trade are transport, banking, insurance, warehousing, communication, packing and advertising. क्लियर? कॉमर्स में क्लियर लिखा है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस. ट्रेड में 2, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल में 2, होलसेल एंड रिटेल. एक्सटर्नल में 3, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, री एक्सपोर्ट, वेयरहाउसिंग, सब क्या है. ठीक है, चलो देखते हैं. कॉमर्स. नाउ व्हाट इज कॉमर्स? जो मेन कंसेप्ट है कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज. मतलब बिजनेस भी आ जाता है और साथ में ऑक्सिलरी भी आता है. तो कैसे लिखा है? कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, दैट इज ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड. इसलिए बोला है व्हाट इज कॉमर्स? कॉमर्स मीन ट्रेड एज वेल एज ऑक्सिलरी सर्विसेज. फिर क्या लिखा है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज नॉर्मल ट्रेड. ट्रेड का डेफिनेशन बोल सकते हैं ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज ऑफ मनी. But there are a lot of activities that are required to facilitate the purchase and sale of goods. सही बात है. ट्रेड होना, मैंने आपको बोला खरीदना है, बेचना है, बट फॉर द ट्रेड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंग. बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है. वो कैसे करें? बट देर आर ए लॉट ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे एक्टिविटीज करना पड़ता है that are required to facilitate the purchase and sale of goods. These are called services or auxiliaries to trade and include transport, banking, insurance, warehousing, communication, advertisement, packing and warehousing. Right. Commerce therefore includes both buying and selling of goods. Trade as well as auxiliary service such as transport, banking, etc.
कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. लिंक देना, उनके बीच में एस्टैब्लिश करना, एक ब्रिज जैसा काम करना. It embraces all those activities which are necessary for maintaining a free flow of goods and services. Thus, all activities involving in the removal of hindrance in the process of exchange are included in the commerce. The hindrance may be in the respect of, hindrance क्या हो सकता है? In the process of respect of person, place, time, risk, finance, etc. Right? Yes. So friends, commerce means what? Commerce include two types of activities, that is the trade as well as the auxiliary to trade. Buying and selling of good is termed as trade, we know. But there are lot of activities that require to facilitate the purchase and sale of goods. These are called service or auxiliary to trade and include transport, banking, insurance, warehousing, commerce. Therefore include both बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कॉमर्स मीन्स ट्रेड एज वेल एज द ऑक्सिलरी सर्विस टू ट्रेड. ओके, नाउ व्हाट दे वांट टू से, कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर. इट एम्ब्रेसेस ऑल दोस एक्टिविटी, embrace all those activity which are necessary for maintaining a free flow. Free flow का मतलब आराम से, of goods and services. Thus all activities involving the removal of hindrance in the process of exchange are included in commerce. The hindrance may be respect of, क्या क्या हो सकता है मुसीबतें? persons हो सकता है, place हो सकता है, जगह, time हो सकता है, risk, finance, etc. The hindrance of the person, right? Now what they want to say, hindrance of the person is removed by trade, right? Trade मतलब कैसे लोगों को हम सामान बेच सकते हैं, thereby making good available to consumer from the possession of ownership. Producer, transport remove the hindrance of place by moving goods from one place to another, right? Storage and warehouse actually remove the hindrance of time, right? Time utility बढ़ा देता है by facilitating holding of stock or goods to be sold as and when required. क्योंकि सामान को स्टोर किया जाता है और जब जरूरत पड़ती है, when it is required, at that time we supply the goods. इसलिए goods held in stock as well as goods in the course of transport are subject to a risk or loss or damage due to theft. Theft मतलब चोरी होता है, fire, accident, etc. Protection against this risk, जो protection होता है, जो risk is provided by the insurance of the goods. Capital required to undertake the above activities is provided by the banking and the financial institution. Advertisement makes it possible for producers and traders to inform the consumer about the goods and services available in the market. Hence, commerce is said to consist of activity of removing the hindrance of person, place, time, risk, finance and information in the process of exchange of goods and services. Clear? Right. Now the topic, देखो आपके पास यहाँ एक एम्बलम भी आया, मेक इन इंडिया, जो आज बहुत इंपॉर्टेंस हो चुका है हमारे लिए. राइट, वी प्रोवाइड दिस इनिशिएटिव, राइट, आवर गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द इनिशिएटिव मेक इन इंडिया. जैसे मेड इन चाइना हो रहा था, अब मेक इन इंडिया, हमारे देश में बनाओ सामान. Make in India is an initiative launched by the government of India on 25th September 2014. तब से स्टार्ट हुआ है. To encourage national, हमारे देश में जितने भी इंडस्ट्रीज है, national as well as multinational companies, the big companies which are in the world, to manufacture their products in India. The major objective behind the Make in India initiative are job creation and skill enhancement. Job creation and skill enhancement in 25 sector of the economy which are as follows. Right? क्या लिखा गया है? Make in India is an initiative launched by the government of India. कब स्टार्ट हुआ था? 25th September 2014. To encourage national as well as the multinational companies to manufacture their products in India. Major objective क्या था? To job creation and skill enhancement in 25 sectors of the economy.
चलो क्या क्या है। फर्स्ट इज द ऑटोमोबाइल, है ना, गाड़ी बनाने की कंपनियां। नंबर टू इज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, द स्पेयर पार्ट्स दैट वी रिक्वायर। एविएशन इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, chemical industry, construction, defense manufacturing, electric machinery, electronic systems, food and processing, information technology and business process management, leather industry, media and entertainment industry, mining industry, oil and gas industry, pharmaceuticals, port and shipping, railways, renewable energy, roads and highway, space and astronomy, textile and garments, thermal power, tourism and hospitality and wellness. Wellness मतलब ये हॉस्पिटल, राइट। तो इतने सारे इंडस्ट्रीज के नाम दिए और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू क्रिएट द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द स्किल एनहांसमेंट। तो पहला कौन सी इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। नंबर टू इज ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स। थर्ड एविएशन इंडस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी के बाद केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस पता है ना सबको, डिफेंस का मतलब जो हमारे आत्म सुरक्षा के लिए डिफेंस, है ना, वैसे इंडस्ट्रीज। अभी हमने राफेल खरीदे, हमने फ्रांस के पास से, तो ये होना नहीं चाहिए। हमें खुद अपना प्रोसेसिंग, हमें खुद का अपना फाइटर जेट्स हमें खुद बनाने हैं। इलेक्ट्रिकल मशीनरी, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लेथर इंडस्ट्री, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, mining industry, oil and gas, pharmaceutical industry, port and shipping, railway, textile and garments, shipping, tourism and hospitality, thermal power, textile and garment, wellness। तो ये इतने सारे इंडस्ट्रीज के नाम दे के रखे हैं। तो व्हाट वी कैन से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल्स, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट, फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ऑयल एंड गैस, रेलवे, फार्मास्यूटिकल, माइनिंग, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी, रिन्यूएबल, टेक्सटाइल, गारमेंट, रोड एंड हाईवे, थर्मल, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी। इतना सब कुछ उन्होंने बता दिया आपको। Now what is trade? Trade का मतलब क्या है? Trade is an essential part of commerce. Trade is an essential part of commerce. It refers to sale, transfer of exchange of goods. Clear लिखा है, trade is an essential part of commerce. उसके बगैर नहीं होगा। We'll see in the next period. तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? The first importance we have given to कि भाई कितने तरह के इंडस्ट्रीज होते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री से आज हमने शुरू किया। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज हैज बीन डिवाइड, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो के बात हुई, राइट। देन कम्स द टॉपिक, उसके 5 टाइप है, एनालिटिकल इंडस्ट्री, सिंथेटिक इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, असेंबलिंग इंडस्ट्री। फिर हमने पढ़ा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, टेरिटरी इंडस्ट्री, चार्ट बताया गया। ये चार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है, मैं इसे हाईलाइट कर लेता हूँ। Yes. After that, कॉमर्स में हमने पढ़ा, कॉमर्स इंक्लूड 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड। नेसेसरी इंफॉर्मेशन ये पढ़ा हमने, मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव शुरू किया हमने, इसके अंदर 25 सेक्टर्स के बारे में बोला गया है हमसे। राइट। So okay friends, we are stopping here. Just revise this much. Thank you for listening. Take care. God bless you.